Hello, everybody. Good evening. I'm Siddharth, your friend philosopher guide. Uh, it's going to be an amazing session, yeah. So, you're watching Adda 24/7 IS, and this is going to be an amazing and great session. First of all, let me thank you all. We have just did a session, I think 4-5 hours before, around 11 a.m., and it was an amazing success. Uh, मतलब मैं 6 घंटे में आपने 1200 views दिलवा दिए and we wasn't aware that our IS channel has got so many English audience, and this is the reason why we have introduced this batch. So first of all, let me thank you all. Thank you so much for being a part of this amazing, incredibly innovative session, because here we will talk about how you can crack UPSC CSE examination in your this attempt. In your attempt. I'm not talking about the attempt which you will make in 24, 25, 26, but whenever you have thought to kill it, you will do it. Whether it is 24, 25, 26. So I think if you are new in this session, I would sincerely request you, yaar, एक बार ना, please just watch the description box. वहाँ पे you will find a Google form. Google form में आप जाएंगे and please fill it your name and detail. And why I am saying it? Because I will not tell you now. Because our faculty, our dear members, they will share you the insight about this session. So what is this session? क्या है भाई रायसाना हिल क्या है जो कि लॉन्च हुआ है ये बैच रायसाना हिल अपने आप में इट्स इनक्रेडिबली वेरी हिस्टोरिकल थिंग कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जहां बैठती है उसको रायसाना हिल कहते हैं जहां पे राष्ट्रपति भवन वहां उसको रायसाना हिल कहते हैं तो जब भी आप कभी गुजरेंगे ना राष्ट्रपति भवन से व्हेन यू विल सी वो शानदार एक ऑसम लुक जो कि लटियंस ने बनाया है हर्बर्ट ने एग्जीक्यूट किया आहा हा मतलब मजा आ जाता है ऐसा लगता है कि यार मतलब हम लोग बैठे ही हैं वहां पे है ना सो मुझे भी और हम सबको ऐसा लगता था व्हेन वी वर इन योर फेज व्हेन वी वर इन योर पैजामाज कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना है मैं तो इलाहाबाद से और फिर बनारस से ट्रेन से आता था यार वहाँ पे सफर करने आता था फोटो वोटो क्लिक करने सो इट्स मेमोरेबल amazing. That's why we have given this batch name is Raisana Hill because um, it is an epitome of bureaucracy. It is an epitome of success and hard work. So UPSC Civil Services Examination. This is what we are going to talk about here. And let me tell you, the biggest challenge what English medium student face is what you're going to tell me now. I'm not going to share. So I would request everybody, Mr. Abhay Kumar या सुशील साहिल यार आप लोग जितने भी लोग एक्टिव हो ना I would sincerely request एक बार सेशन को शेयर कर दो because I know कि पोटेंशियल कितना है इस कैमरे के पीछे आपके सारे फैकल्टीज खड़े हैं एंड दे वोंट कम इन हियर अनलेस कि यार कुछ व्यूज अगर हम लगभग 100 व्यूज तक पहुंचे प्लीज रिक्वेस्ट यू टू शेयर एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगाइए टेलीग्राम पे शेयर करिए बिकॉज इंग्लिश मीडियम की ऑडियंस बहुत ज्यादा है एंड इंग्लिश मतलब आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन लर्न इंग्लिश वाला इंग्लिश बहुत लोग हैं इंग्लिश मीडियम की जनता बहुत ज्यादा है लेकिन जनता ज्यादा है तो हमारे पास कंटेंट ज्यादा है कंटेंट ज्यादा है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं वो लोग भी इंग्लिश में कर रहे हैं सो हम कंफ्यूजन ज्यादा है when you will be given a lot of options you will definitely get confused and this is the major challenge तो आप मुझे बताइएगा कि what is your challenge अब वैसे हिंदी वाले को तो कहते हैं कि हाँ मतलब कंटेंट नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो वी हैव गॉट आवर हिंदी बैच एज वेल बट इंग्लिश के लिए तो व्हाट इज द चैलेंज इंग्लिश के लिए सब मक्खन है सब क्लियर हो जाएगा एग्जाम इज इट दैट इजी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दैट यू कैन इजीली क्रैक एग्जामिनेशन डज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और चैलेंजेस ऐसा मतलब दिल से बताओ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का कोई चैलेंज नहीं है डेफिनेटली है एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं is there any platform which gives you the great or right mentorship? Is there any platform which helps you to understand you, not the company, basically? Is there any platform available? Yes. And this is what we are focusing, this is what we are catering. That the main USP of Raisana Hill is that each and every faculty here, which you're seeing here, will not only teach you, serve, because we are looking at the end goal of this product, serving the Bharat Mata. Okay? Everybody will give you personal mentorship. Now,
let me tell you, personal mentorship is really, really required. I know that you need personal mentorship. I know that you need guidance. I know that you are directionless. I know I used to speak, sir. A lot of students, I think everybody, बहुत सारे लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात करते हैं एंड द मेजर पॉइंट इज दैट क्या करें सर, कैसे करें सर, किताब नहीं है सर, मैंने वीडियो लेक्चर ले लिया है, यहाँ का वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, बट अब मेरे पास क्या करें, अब आप बता दो. So this is what you lack on mentorship, and this is what we bridge this gap by introducing Raisana Hill. So with Raisana Hill, we are focusing specifically on mentorship. Okay? अब वो भी पर्सनल मेंटोरशिप, ये नहीं कि हाँ 150 बच्चा है 200 बच्चा है और इज टू वन कि आके सिर्फ पढ़ाएं और चले जाएं. नहीं, 1-to-1 मेंटोरशिप है, सो दैट बिकॉज वी आर फोकसिंग, हमारा नाम होगा, हमारा नाम होना चाहिए कि अगर आप लबासना में जाओ ना तो अड्डा 24/7 के फैकल्टीज का नाम लो आप, कि वहां से हम पढ़ के आए हैं, तो हमारी भी तो सक्सेस जुड़ी है ना यार आपके साथ. So you can say, yes, we are selfish because we see your future and we see you buying ticket Labasna. आप जा रहे हैं वहाँ पे. Okay. So Kamal, Abhay and everybody, 40 live चल रहा है लेकिन सब शांत होके देख रहे हैं. 43 live चल रहा है. But I sincerely want you guys to please just raise your hand and tell me in which year you are looking to crack UPSC. What do you think that this is the year मुझे UPSC फोड़ना है? कौन सा साल है? मुझे बता दो आप. 2024 में, 25 में, इनफैक्ट इन केस अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट जो हमें देख रहा है, जो जिसका मेंस है अभी, आज क्या तारीख है सर? आज 8 तारीख है. 15 तारीख से भैया ऐसे, मेरे ख्याल ऐसे है, 15 तारीख से मेंस का फर्स्ट पेपर ऐसे का है, एंड देन साइमल्टेनियसली, राइट. सो एनीबडी हियर who is giving attempt in 2024, 25, 26, anybody? और चलो ये बता दो कि आप लोग इंग्लिश माध्यम से हो भी या नहीं, या फिर सिर्फ मेरे लिए आप लोग आ गए हो, मतलब बढ़िया बता दो आप, या फिर इसलिए जो डेडिकेटेड जो हमारे एस्पिरेंट हैं ऑन दिस चैनल. सो मीनवाइल व्हेन यू कमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट, हमारे एडिटर भैया नहीं है क्या? हमारे पास गूगल फॉर्म जरूर होगा, है ना सर? एक बार देखेंगे क्या अगर हमारे एडिटर भैया होंगे, अगर गूगल फॉर्म, बिकॉज अगर बच्चों को नहीं मिलेगा गूगल फॉर्म, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो just आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना गूगल फॉर्म होगा, जस्ट फिल इट. व्हाई? बिकॉज दीज मेंटर्स एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू, और फिर हम 1-to-1 मेंटरशिप करेंगे. नाउ लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल नॉट waste your time, rather I will invest time in this session. So I would request Byomkesh sir to please come here, because each and every mentor is here, and I would request first Byomkesh sir to come here and talk about this session, because when Byomkesh sir came here, so we decided to launch a batch which is pure English medium batch. Though thoda sa late ho gaya yaar, but today this is the moment I want him to be here and talk about Raisana Hill. आपका स्वागत है सर, प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. शुरुआत करूंगा सर, आपके आते इज लाइक 62, मतलब क्या बात. शुरुआत करूंगा एक शेर से. ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख. हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख. हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख. तो जैसे कि हम लोग एक जबरदस्त सेशन, सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि बहुत सारे क्राउड ऐसे हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन साउथ इंडियन स्टेट लाइक यस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर राइटिंग जो है इंग्लिश है, एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. तो ये बैच केवल इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं होगा, यहाँ पर जो है कंटेंट इंग्लिश होंगे, बट एक्सप्लेनेशंस विल कवर इन 2 लैंग्वेज, बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. फर्स्ट थिंग लेट मी क्लियर. सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम लोग जो है सबसे फर्स्ट फोकस हम लोग कर रहे हैं 1-to-1 मेंटरशिप पे. The main thing, main priorities we are giving here 1-to-1 mentor. बच्चों एक चीज मैं इतिहास से बताना चाहूंगा. चंदू, जैसे कि मैंने बताया भी था, एक बार आप लोगों को बताता भी हूँ, एक चंदू, एक गरीब फैमिली का चंदू
चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था बिकॉज चाणक्य की वजह से, चाणक्य की मेंटरशिप की वजह से एक गरीब घर का बेटा चंदू जो है चंद्रगुप्त मौर्य बना था। तो आप सब लोग में वो क्षमता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला क्षमता है। तो यहाँ पर हमारे जो टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सी सेट, हर प्रकार का जो टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को हर एक चीज पे जो है गाइड करेंगे। एंड बच्चों, आप लोगों का जो बैकग्राउंड जो है अलग अलग हो सकता है, किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का साइंस बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का जो है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हो सकता है, कोई बीटेक स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई 1 ईयर एक्सपीरियंस है, कोई हाउसवाइफ भी है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं 1-2 बार इंटरव्यू में बैठ चुके होंगे। तो आपको आपके हिसाब से मेंटोरशिप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीजें सब लोगों को पकड़ा दी जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा खासियत जो राइसना हिल का होगा, 1-to-1 मेंटरशिप टू एवरी इंडिविजुअल, वेदर योर बैकग्राउंड इज ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, वर्किंग प्रोफेशनल और हाउसवाइफ, आपको आपकी तरह तरह जो है मेंटरशिप दिए जाएंगे। ऐसे होलिस्टिक मेंटरशिप नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट डे विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज। ये सबसे बड़ा खासियत है सर इस चीज का। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, इफ विल कवर द टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इफ विल कवर द टॉपिक वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो, या फिर प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सॉइल, तो उसी टॉपिक को उसी दिन आप टेस्ट सीरीज दोगे, और उसी दिन पर्टिकुलर हर एक फैकल्टी जो है उसी पे आपको आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाएगा। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू राइट, यू हैव टू अटेंड द टेस्ट सीरीज एज वेल एज द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये चीजें हम इस रायसेना में सबसे खासियत है। और यहाँ पर जितने भी अड्डा 247 के जो टॉप लेवल पे एजुकेटर हैं, आप सब लोग को साथ देंगे, और हमेशा जो है हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट। सो हमारा कोर क्या है, हमने अभी डिस्कस किया पर्सनल मेंटोरशिप का। ये वही मेंटोरशिप जो कि सर ने बात किया, चंदू से चंद्रगुप्त मिला, और ये वही मेंटोरशिप है जहाँ पे आप अर्जुन को मिला कृष्ण के द्वारा, जहाँ पे परशुराम को मिला, कर्ण को मिला परशुराम के द्वारा। ये वही मेंटोरशिप है। अगर गुरु ना हो तो फिर शायद शिष्य भटकते रहेंगे। ये हम लोग के साथ भी हो चुका है। अर्ली एज में शायद हमारे पास हमने बहुत गलतियां की हैं, और उसी गलती को सुधारने के लिए आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, और उस गलती को आप ना करें। हमें पता है कि गड्ढे कहाँ कहाँ पे हैं। वी ऑल नो दैट वेयर द पाथ इज गोइंग ऑन। हमें ये पता है कि गड्ढे कहाँ हैं, आपको वहां नहीं जाना है। रास्ते कैसे हैं ये भी पता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ, सो आवर, नहीं नहीं नहीं, मुझे आई थॉट कि वो सर कह रहे हैं कि नहीं उनको बुलाओ। यहाँ भी पहले आप चल रहा है, बट योर favorite faculty, and I would request Sashank sir to please come here and address the crowd that how Raisana Hill will help them to crack UPSC. Thank you, Siddharth sir. Thank you. Thank you. Hey, good evening, everyone. Adda 24/7 में आपका स्वागत है. My name is Shashank Roy, and I can see Natik, Pavan, Queen Siddiqui, Mizna, Avash Kumar, Karishma, Gautam. Thank you so much, team. Thank you. Please keep forwarding your comments, and I'm here to answer all your questions. So, what was the purpose of creating this platform for this English medium? Because what I believe that there is a vacuum, there is a gap between what we are training inside the classroom and what is being expected from UPSC. If you look at UPSC exam pattern, every coaching institution says that UPSC has gone mad. UPSC is asking some unexpected questions, but the reality is, if you look at what is happening around us, if you look at disaster management, if you look at climate change, if you look at international relations, if you look at terrorism, now the new avenues, new vistas are being opened. You talk about terrorism. 10 years back, there was a different dimension and different definition of terrorism, Right. but in the era of artificial intelligence, things have changed completely. Those days have gone when the terrorists were crossing the border, but today that is not required. One single drone will do that job. So the idea is you must be trained in the new reality. What we are training is completely detached from the reality. And in this session on this platform, our single-minded obsession is, I will say, single-minded obsession. There's a degree of intensity between dedication, devotion, and obsession. I mean it. You know me. You have seen me in Physics Wala.
I always use the word, it's a complete war against mediocrity, war against average. You have seen my content, you have seen my delivery, and I'm promising again that this is going to happen. It's a war against average. It's a war against mediocrity. It's a war against what we have created on this digital platform. In reality, what we have done, we have delivered the mediocrity. We have not trained our generation. The question is not about how many students will be qualified for civil services in the final list. The question is about we as a mentor. Are we training you in the right way? You may not become an IAS, but you must end up being the strongest version of yourself, and that is the ultimate responsibility of people like us. Otherwise, there are no wrong soldiers, only wrong commanders. There are no wrong students, only wrong teachers. And we will not let it happen here on this platform. So get set ready for war. I'll be back with the new session. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much. That was very crisp and precise and to the point. Thank you, Shashank sir. So I won't waste your time. I would request Dr. Zia to please come at the stage and explain about how students gonna crack Raisana Hill. No, not Raisana Hill. UPSC via Raisana Hill. How they will go reach Raisina ये सब आपकी वजह से हुआ है. आप आए हो तो सब इधर उधर हो गया. Actually, what Siddharth sir said is absolutely true. How you will reach Raisina Hills means in your own official car. One day. Wow. Definitely you will be either in the north block or the south block. This is what our zeal is. Now, one thing I want to tell. There are numerous channels, educators who are coming up with one strategy. We have to understand one thing, that we are teaching these students to run a race. But no one has a similar starting point. Everyone has their own purpose, own dreams, own aim of why they have chosen this field. Definitely. So if the starting point is not same, how can be the strategy be the same? You cannot copy paste someone's strategy. You have to understand one thing. That is why we are here with personalized mentorship, because we will understand first of all that what is your starting point, why you want this, why you want to be an IAS officer, why you want to be an IPS officer. And this is a question that you need to ask first of all from yourself, not from us. It is you who will first give us this answer that, sir, we want to be an IAS officer for this reason. Like sir was giving example about someone is a professional, someone is a working woman. Yes, that is where your starting points differ. A working woman cannot copy the strategy of a student who has just completed graduation or post-graduation and started studying. The problem is everyone is trying to copy paste. So first of all, we are going to end this dogma that no, there is nothing like copy paste. That is what personalized mentorship is all about. And about UPSC. UPSC is not at all about knowledge. Knowledge is the most freely available thing on internet. UPSC is about understanding. How deep you can analyze a thing. Knowing something is different and understanding that thing is different. That is why if you will closely observe, at no stage UPSC says that it is a general knowledge paper. They say general studies. So when you are having the term studies, means you have to construct it over certain things. Of course, knowledge is one of the parameter. And Shashank sir said that, sir, that's a war. It is, sir, there is one more war, and that is a war between the aspirant and the unknown. And who is this unknown? The person who will set your examination paper. We will tell you that yes, with what mindset they come up with. Why some? Have you ever think that if a question is there in examination, why it was there? Is it just that the examiner was just turning pages and he liked a particular paragraph and okay, let's take it? No. Understanding the mindset. Exactly. This is a psychological war. I have analyzed the mistakes in past few years. I have not analyzed the paper, but I analyzed the mistakes and I found a pattern. There was a pattern in mistakes of the students who have prepared well. And trust me, we have our friends who are like maybe giving their second attempt, third attempt, and I'll tell you why you're not getting selected. It is not because that you don't know anything. It is because the questions that you are knowing, you are marking it wrong. It is your mistakes. It is not your knowledge. So what we will try to through this is we will reduce
the mistakes, or in cricket की terms में कहें तो we will try to increase the strike rate, that if you attempt 60 questions, let it 55 be correct. We don't want you to attempt 100 questions and then your 55 are correct. No, we want you should attempt 60, 65 questions, 55, 60 questions are correct and you're through. This is what strategy is all about. Don't target 100% syllabus, target 80%, 85% syllabus, but ensure that there should be no mistake in that. And all of these are warriors, and warriors is Shaheen, Shaheen as in the baz. So I'll end again. कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पे. You're not meant to sit on someone's, palace. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे. तो वो ऊंचाइयां बनी हैं किसी महल का, किसी राजा की बालकनी या उसके दरबार हमारे नहीं, हमारी उड़ान जो है वहां तक है. Definitely we all will come, all will help you and ensure one thing, that in this journey of UPSC, either you will win or you will learn, you will never lose. This is one promise I can give you. आप या तो IAS बनोगे या आप सीखोगे, and which is a big, बहुत बड़ी, this is the biggest treasure you can have is learning. So thank you so much, sir. All the very best. I hope all of them we see in our sessions later on. Thank you so much, sir. Over to you. Thank you so much, sir. Thank you. Just wanted to remind you guys that there is a Google form attached in your pin chat or maybe in the description box. I would sincerely request everybody to please भर दो उस Google form को, क्योंकि वो जो mentorship की बात हम कर रहे हैं वो mentorship वो Google form ही है. Because we all know that you lack in guidance. There is something where you need, and that's the bridge we are making it. आपको guidance की ज़रूरत है, आपको mentorship की ज़रूरत है, और right to mentorship आपका हक है. इनफैक्ट अगर ये सेशन खत्म भी हो जाएगा ना तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, और वो आज कल परसों नरसों आएंगे ही आएंगे. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इवन इफ यू विल एनरोल इन दिस सेशन, आप सेशन में एनरोल कर दो और फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मेंटरशिप को हटा देंगे, तो आपके पास सिर्फ सेशन, आप मतलब अगर आप एक कोर्स एनरोल कर लोगे फिर भी आपके पास डाउट आएंगे. तो ये चार्म है, ये मैंडेटरी है मेंटरशिप का, एंड दिस इज व्हाई ये बेस है हमारा, इसीलिए हमने इस बैच को क्रिएट किया है. बिकॉज वी नो दैट यू आर वेरी लर्नड, यू आर वेरी एजुकेटेड एंड यू सी योर फ्यूचर, कहाँ जाना है आपको, लेकिन वहां पे जाने के लिए हमें मेंटरशिप की आवश्यकता है. नाउ वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, यस ये देखो अभी भी गूगल फॉर्म आया है, उसको आपको फिल करना है, एंड दैट इज फॉर प्योर Raisana Hill English Medium batch. Okay. Now I would request Rajni ma'am to please be come here and please help student to let them know how they can crack UPSC via this batch and what is she teaching in this batch. You're welcome. Good evening, everyone. We met in the morning as well. Before I tell you anything, let me start by asking you a question. And my question is, we all are studying for examination, right? You have been preparing for quite some while. There may be some of you who have been preparing for some while, and there may be some of you who have just started the journey. What do you think is the most important thing that you need to do in order to crack this exam, or any exam for that matter? Specifically, we'll be talking about this examination. So what do you think is the most important thing that you need to keep in mind in order to crack this examination? Let me see your answers. Okay. Since we have been talking about war, let me give you a war metaphor. What we really need to do is, you should be able to marshal your arguments effectively and articulate them well. What does that mean? You know, there's a huge difference between objective and subjective paper. If I talk about UPSC, sure, the prelims is objective, but mains and personality test, it's entirely subjective, right? You'll be asked to tell your arguments. You'll be asked to tell your views and opinions on certain things. You'll be asked to explain everything, the concept. It's not like you'll be giving 4 options and you have to choose just one of them. So when you're asked to explain what you think about something, when you're asked to give your opinion, that is where the concept of marshalling your arguments comes in. So even if you know everything, like Sir said, education is everywhere, knowledge is free, it's available everywhere, and I completely concur that, I second that. But to arrange that properly, that's what is marshalling.
And to present that properly is something that we'll be teaching you. Because no matter how much you know about anything, any topic for that matter, if you're not able to present that well, the examinator would not get to know anything about you, and you will lose this battle. So we talked in the morning as well about the strategies and what we are bringing in this batch. Like I told you, we'll be talking about your personality. We'll be helping you transition from aspirant to the officer. And this idea of marshalling the argument, articulating your things well, comes just right there. So we'll be teaching you whatever you know, how to present it well, whether it is in the interview form or it is in your subjective paper, the mains examination. And I think that is the most important thing. What do you think, sir? Right? I mean, we can know everything in this world. Everything is free of cost. You can know everything from the internet. You can get books from the market. But what you won't know on your own is how to present them well, is how to arrange that coherently and in such a way that the examiner is impressed and that gives you marks. How to be present in, let's say, interview in such a way that the panel which is sitting over there, that's impressed. I'll tell you one thing, actually two things. We always think that first impression is the last impression, right? Well, that's true in some context. For example, if I'm there in the interview panel and you come as a student, the first thing I'll notice is, do you have the demeanor of the officer? That will be the first impression, yes. So we'll tell you how to present in that, how to just show that demeanor in that interview first. Second, we usually are nervous. All of us have some sort of anxiety when we enter something important. So sometimes we mess up the first impression. And that's where I'll tell you that, yes, first impression is important, but I think the most important thing is the last impression. And we do not give that much importance, because the last impression will leave some sort of impact on the person's mind, the person that you've met. These are some tips, tricks, strategies, and there are a lot of things that are coming your way in this batch, and that's what we'll be focusing on. Like I said, and like I always say, the personality development thing. So this is not just for your knowledge, your education, for this journey where you're preparing for UPSC, where you're preparing for your examination. It is also for your personality development. And I really hope that you will actually join us, and this will be a fruitful journey for the both of us. That's it. Over to you, sir. Great. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Rajni, ma'am. So, ma'am talked about personality development. It is core of UPSC preparation. It is the core of UPSC preparation. You talk about any topper. Specifically, what they say is you're developing your personality throughout your journey. And if you haven't developed your personality, then you might face this problem when you will be in academy. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि एकेडमी में हैं और वहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे. सो ये जो बैच है, होलिस्टिकली वी आर फोकसिंग डेफिनेटली जो हमारे GS 1 2 3 4 पेपर हैं, हमारे पास ऐसे है, फिर प्रीलिम्स है, CSAT है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज टू द कोर. नाउ let me call upon Rudra sir. Rudra sir, Rudra sir is science and tech faculty, and sir, मैं बस नहीं बोलना चाहता आपके बारे में, आप ही बोलिए अब. Very good evening to all of you, and thank you so much, Siddharth sir. So Adda 24/7 now come with a new batch of foundation. Your foundation will be very strong with this batch, and each and every faculty is going to teach you in such a way that how you will start your journey. The preparation will be very important, and the very important point is that you should start the preparation from the syllabus, and the mentors, the guiding soul in this batch, they all will teach you how you will start your each and every subject, because there is NCRT, how you will read NCRT, how you will go through the standard books, and which standard book you should follow up. These everything will be told in this batch, so that you may have the clear concept of each and everything. Now one of the student is telling that English batch is about to start. Absolutely, we are going to start not only English batch, but also we had launched a
English medium channel, and that is UPSC का dedicated channel है. That name is Adda 24/7 IAS English. So you must subscribe that channel first and foremost, because we will provide each and every free classes so that you can understand the level of faculty, how they will teach you, and again I will tell you the way we will interact, the way we interlink the things, that will be impactful. We will present you pictorial representation. We will make you understand by using pictures so that you may have imaginations, and imaginations are the most powerful thing always. So in this way, we are going to teach you in this batch. This batch covers 24 months, right? This batch will be of the validity of 24 months, and the name of batch is Raisina Hill. This Raisina Hill batch name shows, Raisina Hill, it is related to Aravali's, and Aravali's basically starts from Palanpur, located in Gujarat, and then it ends up in Delhi. So Raisina Hill is the place where bureaucracy is present. So you are going to get each and everything, and all your dreams, all your goals, we are going to fulfill in this batch. We all make you promise. And I want one thing, please do share this video as much as possible so that maximum number of aspirants can connect to our channel. So one more time, I'm telling you, you must subscribe the channel Adda 24/7 UPSC IAS, and on regular basis you are going to get all the faculty members will teach you each and everything, right? So be there and subscribe the channel and come continuous manner. Thank you so much. Great. Thank you so much, Rudra sir. Thank you so much. As Rudra sir has just said, I would sincerely request to everybody, please subscribe that channel, because all the demo lectures, all the videos, after some time will be displayed there. Your YouTube classes will be held there, because it's a new YouTube channel. We all need your support. सो तहे दिल से एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को और यूट्यूब के जो लिंक है, मैं अपने एडिटर भैया से बोलता हूँ एक बार भाई लिंक शेयर कर दो आप, जो हमारे सब्सक्राइब का है यूट्यूब का, तो एक बार प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए और प्लीज़ click on that link, subscribe it, and in coming days you will see a lot of lecture specifically on the subjects current affairs, history, polity, IR, and whatnot related to UPSC. Now, last but not the least, I would sincerely request Chaube sir to please come here and share your experiences with UPSC journey and how aspirants can crack UPSC by using Raisana Hill. Thank you so much, first of all, and I congratulate everybody present over there at Adda 247 IS, Raisena Hills, that is a mentorship batch foundation program. So here we are at a team, we are at a platform that we guide you each and every part of your UPSC journey. For example, when you start thinking of UPSC, you think to have a powerful post, to have a decisive post in the governance, so that whenever you are coming from a village, you want to have some change over there. You want to have the policy to be acted towards that part of your society. And therefore, this batch is especially for that purpose, so that your overall part of your personality, whether when you are thinking of learning the syllabus, governance, policy, ethics, moral values, so that you can opt those values in your personality. So if sir will agree, when we go to our society, when we go back to the villages, some of us feel that we are having very less salary. We should earn more through illicit currencies, through thekedars, through every kind of sources, whatever we are having. But that is wrong. For that, we need a proper mentorship. A mentor is a true philosopher. He is a friend. He is a guide which inculcates that thought in your mind, so that you can become a ideal bureaucrat. You should act for the betterment for your country. You should act professionally. You must have those values which should make yourself a proud Indian citizen as well as a proud officer in your life. So I encourage you to join our series. I will guide you for sociology classes, sociology mentorship, and other GS subjects in which you feel you are having some problem.
You will also be guided in writing the economics test series and adding the policies. What are the new schemes that you need to like? You will be added with various kind of new scenarios, new things, new facts which are to be added to make your answer more justifiable. So share this series with more and more of your friends. Do make your competitors know that how much you are guided with such a great team of mentors, and what we are having at Adda 247 is really encouraging. So further, I invite you all to join our batches, to join our mentorship program, to develop your syllabus, your content, as well as your values in your personality, your level of professionalism, and your level of action. So I invite you all to join our session, and I'm giving back to थैंक Siddharth. यू सो मच सर, थैंक यू Thank सो you मच so चौबे much. सर, थैंक यू सो मच। वो अग्निपथ में लाइन बड़ी शानदार थी जो अमित जी ने कही थी कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये अग्निपथ, अग्निपथ ये वही रास्ता है। आपको पानी नहीं मिलेगा, आग मिलेंगी, लेकिन पानी हमारे ज्ञान से और हमारे सपोर्ट से, मेंटरशिप से वो हेल्प मिलेगी ताकि आप उस आग पे भी पानी की तरह चल सकोगे। मेंटरशिप के बिना आग में जल जाओगे। और जले हुए हैं, छाले हैं मेरे पैर में आज भी, छाले हैं रुद्र सर के पैर में भी और कुछ सारे फैकल्टीज के भी जिन्हें वो राइट गाइडेंस नहीं मिली है राइट टाइम पे। दर्द होता है, मतलब लगता है बहुत दर्द होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मैं नहीं देख सकता, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा मैं सपोर्टर हूँ सर, मैं नहीं देख सकता कि आपके पैर में छाले हों। इसलिए जिस राह पे आप चलोगे उस पे थोड़े से आग हैं, गड्ढे हैं, अगर मेंटरशिप रहेगी तो पानी मिलेगा और सड़कें एकदम मस्त, जैसे कि नितिन गडकरी साहब आजकल सड़क बना रहे हैं ना, वैसी सड़क मिलेगी। सो अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट, लेकिन इनविटेशन से पहले आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीबडी, इट्स अ मैसिव ह्यूज अनाउंसमेंट। सर अभी अनाउंसमेंट कर दें? लेकिन उससे पहले आई वुड वांट एवरीबडी टू प्लीज कम ओवर हियर, ऑल द फैकल्टी। ये देखो आपके लिए एक न्यूज आ गई है, बहुत सॉलिड न्यूज। ओके, बहुत सॉलिड न्यूज आई आप लोगों के लिए, जस्ट होल्ड ऑन। एंड ये एक मैजिकल नंबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। प्लीज सर नंबर बताया जाए। 9026 375482। 9026375482 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे सामने एक बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, दीपेश सर भी हैं, लेकिन डर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे कहाँ आप। खैर, सो दिस इज द नंबर वेयर यू हैव टू कॉल 9026375482। I know that you guys must have a lot of queries, so वो ये one way conversation हो रहा है। please call on this number और जितनी मन करे उतनी बात करनी है आप करो, जितनी भी क्वेश्चन आपके पास हैं you call, and in case if you want to talk to us, in case if you want to talk to any of the faculty, our team will connect your call to us definitely. And once again I would request, please fill the form and register your name, because वो mentorship वाली बात आपको याद होगी ना। Now सर मैं आप चाहते हैं सब रुल सर बैच, और बैच के लिए बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सर आप बैच एक बार ओपन कर दीजिएगा। द न्यूज़ इज 11 सितंबर को बैच लॉन्च होने वाला है। 11 सितंबर मतलब कि 9/11 याद है ना, तो हम लोग ऐसी डेट ही चूज करते हैं कि मतलब आपको याद रह जाए 9/11। तो 9/11 को वो बैच स्टार्ट हो रहा है ताकि कुछ बड़ा कर सकें आप, ताकि कुछ बड़ा हो तो याद हो आपको। तो आप आपके दिमाग में आ गया होगा कि 9/11 को अड्डा में IS इंग्लिश का बैच लॉन्च हो रहा है। सो दिस इज द बैच, रुद सर ऑल योर्स। Thank you so much. So guys, how you will reach to this batch? आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे? First and foremost, you need to write adda247.com in your URL, मतलब Uniform Resource Locator. And when you reach on this, यहाँ पर लिखा होगा आपके लिए all courses are available here, and you need to click on UPSC, and here there are many or various options are given here, but you need to click on UPSC CSE IAS. And because we are going to provide you complete English medium content and classes, and this batch name is Raisina Hill,
and it is a complete foundation batch, and this batch is going to start on 11th of September, right? So it is about to start. Now you can get flying colors in this examination. So here you can click on this batch, and the price, you can see price here 19,999. This is the price of the batch, but you need not to pay this amount. And in this batch you will get all the ebooks, test series, as well as 15 books, which are complete package that will reach to at your home. Is it a printed book that they... It is printed book, yes. Okay. And क्या बात है सर सर Okay. आई वांटेड टू हाईलाइट हियर यार प्रिंटेड बुक मिलेंगी आपको आप समझ रहे हो मतलब कि घर तक जाएंगी किताबें आपके एड्रेस पे तो आपसे आपका शाही एड्रेस का पता लिया जाएगा और किताबें आप तक पहुंचेंगी ठीक है साथ में ई बुक्स भी है सर वी हैव गॉट लाइक 599 ई बुक्स ठीक है तो समझ रहे हो कितना मतलब कंटेंट है सो इट्स नॉट अबाउट टेस्ट सीरीज 211 टेस्ट सीरीज विच इज मतलब एक बार टेस्ट सीरीज आप इस बैच को एनरोल करेंगे सो आपको कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ढूंढने के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा सो क्योंकि सर लास्ट मोमेंट पे हम लोग मतलब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कैसे टेस्ट सीरीज कहाँ से टेस्ट सीरीज लें सो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट एंड आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट बिकॉज हमने बहुत काफी जिक्र किया इसके बारे में लेकिन इसके बारे में जो आप सर बता रहे थे 19,999 ये जो हमारी एनरोलमेंट फी है उसके लिए ये जो एनरोलमेंट फी है ये 9/11 तक ही है और 9/11 तक जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश मीडियम का आके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है तो उसको इस अमाउंट में और इससे भी कम मतलब अगर आप कोड यूज करके अभी हम दिखाएंगे तो इससे भी कम फी में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा लेकिन 9/11 के बाद वो दाम वो बढ़ सकता है और इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ओके सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल यहाँ पर आप सर बिल्कुल बिल्कुल तो आप लोग जो भी whomsoever फैकल्टी मेंबर जो कि आपके फेवरेट हैं आप किसी का भी कूपन कोड लगा सकते हैं यहाँ पर एंड वन मोर थिंग इज हियर you are getting 75% discount here, but with the faculty coupon code you will get 80%, that is maximum. So you can start your preparation simply applying coupon code like you can apply anyone's code like Y583. You can apply this coupon code and you will get this amount is 18,399. That means 18,399. But you need not to pay this amount as well because if you install the Adda 24/7 application whether via Android or Apple Play Store, so it will be around 17,700. So only in 17,700 you will get this whole batch along with the books, material, notes, ebooks, as well as doubt solving classes and mentorship. And time to time you will also get the written material. So this is the number. If you having any doubt, if you having any even you have any doubt like 10% doubt you can simply call on this number and you will be guided by the expert, right? So you can get the information here. Yes sir. The student Mehak Saifi she's saying sir I have a lot of question you will be worried नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है आप सवाल पूछिए सवाल पूछिए और जवाब हम देंगे ये सलाह हमारी रहेगी तो आप व्हाट यू हैव टू डू इज फिल द फॉर्म जो आप फॉर्म है उसको फिल करिए और ये जो लेक्चर प्लानर भी है सर इसमें श्योर सर लेक्चर प्लानर भी है और एकदम प्लान के साथ में सारी चीजें चलेंगी एवरीथिंग विल बी वेरी वेल प्लान्ड है ना और यहाँ पर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप लोगों को क्लासेस मिलेगा from 11th of September the very first class is going to be taken by Siddharth sir orientation की क्लास है और he will guide you कि आप लोग पढ़ेंगे कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे आपकी जर्नी हाउ यू विल सेल योर बोट है ना तो वो प्रिपरेशन की जर्नी ओरिएंटेशन क्लास वो होगा उसके बाद में आपका 12th सितंबर से 10th ऑफ अक्टूबर तक आपको पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी बाय शंकर सर और उसके बाद में देखिए आप लोग एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री व्योमकेश सर की क्लास होगी तो यहाँ पर पूरा प्लानर दिया गया और वेयर यू विल गेट द प्लानर जब आप इस बैच को एनरोल करेंगे तो नीचे की तरफ स्टडी प्लान का पूरा लिंक दिया हुआ है और वहां पर पूरा गाइड किया हुआ है आप लोगों को होल एंड सोल गाइडेंस इज हेयर दैट व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू प्रिंटेड नोट्स मटेरियल ये these are the books you will also get these all books each and every subject right you will also get the books you will get the mentorship you will get 3 minimum mock interview if you'll crack the mains
So everything, esteemed panelist will take your MOOC, right? So in this way, you will be provided a holistic approach to crack this examination, right? So you can see here, everything is mentioned here. So all the approach like prelims, mains, interview, how you will integrate everything. So this is all about the batch Raisina Hill, and it will cost you only 17,700 if you'll apply any faculty code. So you start the preparation, you join this batch and continue your journey with Adda 24/7. Yes, sir. Thank you so much, sir. And this number again. Yeah. So once again, प्लीज नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आप भूलोगे नहीं, और वीडियो तो हमेशा रहेगी प्लेटफॉर्म पे. सो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीबडी, सर आप भी एंड ऑल दी फैकल्टी members, please join with us here at the stage, and let us all together shout out that how you can crack UPSC by enrolling into Raisana Hill. Sir, please. Alright, तो कैमरामैन साहब उसको जूम आउट कर दीजिएगा ताकि सब लोग दिखें. So we have got expert cameraman just behind, अगर behind the camera सारी चीजें ब्लू शर्ट में भी हैं भैया, अच्छे लग रहे हैं. Off guide, so we have got the entire team, कोई missing तो नहीं, वरना बहुत सारे लोग missing हैं. So there are people, there are faculties, those who are not here, they are in paid classes. बहुत सारी paid classes भी चल रही हैं unfortunately, and we are literally missing them. But thank you so much that we all have made it. So sir, अड्डा 247 का हमेशा से प्रयास रहा है, आप लोग बच्चे देखे हो हम लोगों को कि रात के 12 बजे भी सेशन किए हैं, राइट सर? तो ये 12:30 बजे, ठीक है, जो जिस टाइम पे अपने गर्लफ्रेंड या फिर सोने का टाइम होता है, बात करने का टाइम होती है, तो उस टाइम पे हमने पढ़ाया आप लोगों को सबको. तो ये कमिटमेंट जो है अड्डा 247 फैकल्टी का, मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया बट रात के 12 बजे मैंने कभी नहीं पढ़ाया था. तो ये खासियत है अड्डा 247 का. और अभी जो नए टीम और नए जोश के साथ जो अड्डा 247 का बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बेस्ट है. सब लोग अपने अपने, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, हर एक सब्जेक्ट में जो है अपना अपना बेस्ट है. तो आप लोगों को बेस्ट चीज़ हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं. और मैं बता दूं, टॉप सबसे पहला फोकस करेंगे, फर्स्ट थिंग विल फोकस हियर द कंटेंट. द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया, विल प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया. और सबसे पहला चीज़ है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का एक होलिस्टिक अप्रोच, विल प्रोवाइड द होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रिपरेशंस. थैंक यू सर. यस so I think sir, the session has got quite some views, and then we have got we don't want you to get delayed. So I would sincerely request to all the faculty members that should you have anything that you wanted to add, because these people, they will have a lot of questions. So अगर आप कुछ add करना चाहते हो, any valuable thing, I think आप लोगों ने बोल दिया है बहुत कुछ. Anybody would like to say anything to these people, because I think ये लोग जो हैं, and I'm sure आप लोग form fill कर रहे होगे, अगर आप लोग सुन रहे हो हमारी आवाज़, तो सर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप अगर mentorship you देख लो आप, मतलब क्या dedication है, and this is how we will reach there. So focus on filling out the mentorship form, because there we get your information, what you want to do. Okay, so the entire process, the entire schedule which we are sharing with you will go via mentorship. Okay, and simultaneously ये जो number आपको दिख रहा है, ये number वो हाँ, ये वो जादुई नंबर है, आप कभी भी कॉल करोगे, you will get somebody will answer this phone. Okay, so please take a screenshot of this number. अगर आपको नहीं दिख रहा है अभी, तो पीछे जाइए वीडियो में, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, and do call on this number should you have any doubt, and I'm sure you will have lots of doubt. Okay, so anybody would like to add? So one point I want to add here, this batch will completed before your prelims examination. That means prelims related, the whole content will be completed before prelims, and before your mains will complete your whole mains segment, right? This is very important. And again, I want to tell you that 24 months validity in this batch. So if you are going to join this batch, you will have the whole and soul material and everything here.
You need not to roam around here and there, right? And another thing, if you really like this video, please put this video on your WhatsApp, Telegram status so that maximum number of aspirant can join us, right? So please do share, guys, do share. And anything you want to add, आप लोग after the finishing of this video, you can comment below, right? If you are watching this recorded version, so please do comment. If you want any suggestion, you can give us suggestion. You can also tell anything about the batch, right? So thank you so much. Yes. Great, well, thank you so much. मैं ये नहीं कहूँगा ये अंत है, ये शुरुआत है, ये आगाज है एक नए किस्से का. So thank you so much, thank you very much, and Yes, let's crack it. let's crack. हम लोग फोड़ के रहेंगे, तोड़ के रहेंगे. और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो टिकट है ना, जो लबासना टिकट है, वो आपको यहीं से मिलेगा. सो आप टिकट लेके जाइए. उस टिकट के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. हम सब डेडिकेटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं इसके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. सी यू सून. सर see you then in our paid batches. ये लोग आने वाले हैं वहाँ पे, है ना? So see you soon in our paid batches. So मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं, and then the number which is still flashing on the screen, please you can call them. Thank you so much. Yes sir. Information I just remember. Team, tomorrow I was supposed to take Beyond News analysis classes, but it will not be possible. But at 1:30 I'm going to conduct the first session on this platform. So kindly stay tuned, and we'll meet at 1:30 in live classes. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye. Take care. I will give you a new slogan that there was a time when you were struggling, but this time I give you a slogan, let's do it. Yes, sir. Let's do it. Thank you. Thank you all.